वेलकम टू MSME टॉक शो। आज हम मिल रहे हैं मिस्टर जसविंदर सोखी से, जो कि डायरेक्टर हैं रौनक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के। रौनक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका प्लांट पुणे में, भोसरी में और शिरवल में, 2 प्लांट है पुणे में। ये इस इंडस्ट्री में पिछले 4 डिकेड से है। एंड जब हम कोविड का टाइम था और हम सभी अपने घरों में बंद थे और हमें न्यूज़ मिल रही थी और हमें न्यूज़ देख रहे थे कि काफ़ी वर्कर्स को अपने पलायन करना पड़ रहा है अपने होम स्टेट्स के लिए, काफ़ी वर्कर्स को जॉब से निकाला जा चुका है, लेबरर्स वर्कर्स वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। उस समय भी काफ़ी ऐसे MSME ओनर्स थे जो ना सिर्फ अपने वर्कर्स पे ख्याल रख रहे थे बट इनफैक्ट अपनी पूरी सोसाइटी के जो भी अपनी कैपेसिटी थी उनकी, उसके हिसाब से ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे। उसी का एक एग्जाम्पल है मिस्टर जसविंदर सोखी, जिन्होंने कम से कम 100 से 125 दिन कोविड के उस समय जब हम घरों में बंद थे, ये हर दिन घर से बाहर निकलते थे और सोशल सर्विस करते थे, जगह जगह खाना पहुंचाना, अपने वर्कर्स का ध्यान रखना। इन्होंने वो सब कुछ किया जो उनकी कैपेसिटी में था सहायता करने के लिए। तो इसी कारण से भी काफी वर्कर्स इनके साथ जुड़े रहे, कोई भी वर्कर इनकी कंपनी से पलायन करके नहीं गया। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल एक सोशल सर्विस का। और इसीलिए मिस्टर जसविंदर सोखी ना ही एक रियल हीरो है इंडियन इकोनॉमी के, क्योंकि ये MSME सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी कंपनी के द्वारा, बल्कि ये हमारे एक बहुत ही बढ़िया सोशल वर्कर रहे और ये एक अनसंग कोविड वॉरियर भी है। चलिए मिलते हैं मिस्टर जसविंदर सोखी से। भुकेल्यांची भूक जाणणं आणि त्यांच्या मुखात घास घालणं म्हणजे पुण्याचं काम। कोरोना संकटात हजारो गोरगरीब गरजूंना अन्नदान करून पुण्य मिळवणारं असंच एक सेवाभावी व्यक्तिमत्व म्हणजे जसविंदर सिंग सोखी। संत बाबा मोनी साहेब वृद्ध आनंद आश्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात अन्नदान केलं। यामध्ये हॉलिवूड गुरुद्वार, गणेशपेठ गुरुद्वार अशा विविध संस्थांची मदत त्यांना झाली। लॉकडाऊनमुळे नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली होती। अशा कठीण काळात जसविंदर सिंग यांनी पिंपरी, आकुर्डी, वालेकरवाडी, आनंदनगर, वाकड, खेड अशा विविध ठिकाणी अन्नदानाचा उपक्रम राबवला आणि गोरगरिबांचं जगणं सुसह्य केलं। आणि त्यांच्या मुखात घास घालणं म्हणजे पुण्याचं काम। कोरोना संकटात हजारो गोरगरीब गरजूंना अन्नदान करून पुण्य मिळवणारं असंच एक सेवाभावी व्यक्तिमत्व म्हणजे जसविंदर सिंग सोखी। संत बाबा मोनी साहेब वृद्ध आनंद आश्रमाच्या संकट काळात इतरांच्या मदतीला धावून जाणारे जसविंदर सिंग सोखी यांच्या कार्यास चिखली मोशी चरोली हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन आणि अविरत श्रमदान संस्थेचा सलाम। MSME टॉक शो में आज हमारे साथ है रौनक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर जसविंदर सोखी जी। हाय सोखी जी, आपका स्वागत है MSME टॉक शो में। एंड जैसे आप जानते हैं, टॉक शो हम लेकर आए हैं टू सेलिब्रेट रियल हीरोज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और आप भी एक MSME है, रियल हीरो है हमारे इकोनॉमी के, जिसको वी ऑल नो दैट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ MSMEs। तो सर हमें बताइए, हाउ यू स्टार्टेड दिस कंपनी। मींस दिस कंपनी वाज स्टार्टेड बाय योर फादर इन 1975 और 1975 से लेकर अभी तक की जर्नी से लेकर जाइएगा। अभी 1975 में हम तो 6-7 साल के थे, बट उन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम ओनिंग अ ट्रक, ओनिंग अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड देन गेटिंग अलोंग विद अ फ्यू पार्टनर्स एंड स्टार्टिंग अ वर्कशॉप एंड स्लोली डेवलपिंग इट एंड डूइंग इट ऑन हिज ओन। Later on, it was in 85 that we came to MIDC, and we had one single client at that time, and that was KSB Pumps. And they also needed some factory, some workshop to serve them for some of their components and all. And since then, we are still working with they are our major clients. More than 40 years, almost 40 years. More than 40 years we are with them, and I don't think it have ever happened that we were out of work. Even during the times of COVID, we did business. So that was the journey which has come down to now 2023. In the meanwhile, we converted the company into a private limited company
and we have got two plants now. One is here in Bosri, one is in Shirwal, and along with the time we are changing our strategy also. We are going in for automation. तो सर आपके प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग में? Basically, we started with some machining of components for pump parts and all, and slowly along with that we went into fabrication. So now it is one of a kind unit. Most probably you won't find many of the small scale industries or the MSMEs where you will find both the capacities at one place, like glass fabrication also, along with that finish machining also. So we give a complete product. Serve our clients with the finished component, right from scratch to a painted job. So our main component you would say is the base plate or basis of machines. We are doing about 150 tons a month. तो सर आए जितना मुझे पता है कि आपकी शुरुआत हुई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, जहाँ पर कि वर्कशॉप से लेकर अभी आप 2 यूनिट में आप अपना ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, एक पुणे के यहाँ पर भोसरी के प्लांट में, सेकंड में शिरवल। सो क्या आपकी स्किल सेट था जिसने आपको हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने में? You can say that it is in the blood. Like our father was a true businessman, you can say, not in the sense of making money, but in the sense of giving service. Money would come on its own. And the main thing that he taught us was to work ethically, not to like just do business for money. Work for money, do ethical business, do not fool your clients or anything of that sort. So it is still the same way, and we have been never out of work. Fantastic. So I heard a lot about your father. So what key changes you implemented? Means I think that there was some changes in the way of working. See, that is a generation gap now. There is something which we learn and we would like to implement that also, but you have to change along with the time. Like we need some kind of automation. So when a self-made person does business, he doesn't want to spend much on certain aspects. Wherein, like in the new generation, you come, you want to do automation, you don't want to depend on manpower, and all these things are there. Like one of the main aspects was like he wanted everyone in the company to know each and every work, which nowadays is not possible. You have to work department wise. The people should know what his job is, and he will only do that particular job. And these are the hurdles that we are facing now, and we are thinking that he was right. Everybody should know everything. Fantastic. Yes, yes. Sir, means during COVID, means pre-COVID, you decided to expand. I think in the year Yeah, 1920, and when I think everything was in place, Yes. and then suddenly COVID happened. Yeah. So how did you overcome all these challenges? No, COVID thing कैसे वो pass हुआ phase, and how did you manage your team, your production, etc., etc. So basically, we are also very socially active, and even our father was the president of our community for almost 20 years, and also we are into the Rotary and all. So socially being active, we knew what is the need of the society. So it's always that give back to society, whatever society is doing for you. So it was that time, and even directly on the next day of COVID, I went out and just to have a round. So we went to the ashram. This is Vrindaashram out here, and we were preparing food only for the policemen who were waiting on the roads and all. And slowly we started with about say 100 lunch boxes on the first day to about 2,500 boxes every day. I've For the seen next- lot of your photos and your active daily basis. The COVID में when everybody was locked in their houses, homes, Yeah. house and homes, and you're active every day, not only managing your employees but managing the other people as well. No, what happened that we had started some business with a company in the US, Haas, and they were making machinery for the medical industry. So they were the first guys to mail us a letter that let their company work. It was a kind of a permission, which we got a permission from the corporation also. We started with 3-4 employees. We started our shop after 15 days of closed down, wherein a lot of people could not do it for 2-3 months. But in the 15th day, we started with a few workers. We got the permission, and during that time, it was that we didn't have a lot of work because most of the our local customers were closed.
So I had nothing to do. I could not sit at home. So we started with that, and I enjoyed about 100 days of distribution of food, preparation, collection of Fantastic. ration, and a lot of our friends and well-wishers helped us in that. ग्रेट. सो फ्रेंड्स, आप लोग ये नहीं देखेंगे, आप अगर मीडिया में अगर कुछ सुनते हैं न्यूज लॉकडाउन के समय, तो हमें दिखाया जा रहा था कि काफी वर्कर्स को अपने घर वापस जाना पड़ रहा है, बट ऐसे भी एमएसएमईज या इंडस्ट्रीज थे जो कि पूरा सपोर्ट ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज का कर रहे थे बल्कि पूरी सोसाइटी का. तो जैसे अभी जसविंदर सर ने बताया, जसविंदर जी ने, कि 100 डेज ऑलमोस्ट उन्हें डेडिकेट किया अपने लाइफ के सेवा भाव में, है ना. जितना भी इनसे सपोर्ट हो सका उन्होंने पूरी सोसाइटी के लिए खाना अरेंज किया, भोजन की व्यवस्था करना, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना. और इसलिए इनके मोस्टली इनके जितने भी एम्प्लॉयज थे इनके साथ जुड़े रहे, वो कहीं गए नहीं. और ऐसे ना सिर्फ सर है, ऐसे कई और इंडस्ट्रीज भी थे. सो जरूरी है कि हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना कि जिन जिन के पास कैपेसिटी थी सपोर्ट करने की, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हमारे एम्प्लॉयज का ध्यान रखा जाए, हमारी सोसाइटी का ध्यान रखा जाए, सोसाइटी मेंबर्स का. Yes. A lot of our colleagues, a lot of our friends from the industry also, they had started their kitchens. They were distributing in different parts. So it was there. There was a lot of help from the industry. सर, व्हाट नेक्स्ट? अभी आप इस यू आर कैरिंग फॉरवर्ड मोर देन 40 years of legacy created by your father, and then obviously with your hard work you are taking it ahead. So what next? See, What are your plans? I'm in the second generation. The third generation has already joined in. It's just 20 years now, studying also. So next plan is that we go into export in a big way. We come out with a product of our own where we have got ourselves attached with a company. We are manufacturing pumps and motors in that. And this, it's future growth. We want to go ahead fully. Like whatever is going on is fine, but to diversify into manufacturing our own product. ओके. एंड जस्ट सर, लास्ट क्वेश्चन, हम एडवाइस चाहेंगे हमारे करंट जनरेशन के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि आज आपने जब बिजनेस शुरू किया, आपके फैमिली जब बिजनेस शुरू हुआ तो बूस्ट स्टेप हुआ. ये बूस्ट स्टेप वर्ड यूज हो रहा है कि जब अपने खुद के सोर्सेज से हम बिजनेस शुरू करते हैं, उसको स्केल करते हैं. तो आपने उस टाइम कोई भी नहीं था, ना तो कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स थे, ना वेंचर कैपिटलिस्ट थे, फिर भी आप सक्सेसफुली यहां तक आए. जो करंट जनरेशन है, जो कई बार इम्पेशेंट हो जाती है, उन्हें लगता है कि भाई आज आइडिया आ गया, अब कल फंडिंग आ जाना चाहिए, उनके बारे में आपका क्या सजेशन? नहीं, उनके लिए सजेशन क्या है, सब टाइम के हिसाब से चलते हैं. What happens is basically for us it is a slow growth. At present, whatever investment is there and whatever assets that we have got, if a new generation guy comes and he says you are just doing peanuts, they are saying that my turnover should be far higher than this. That is what their feeling is. But it has to be sustained also. If we try to do that, we'll do it for a few months or so. But then on a continuous basis, and it's a slow growth. So like we didn't go full-fledged after each and everything. So just because it was slow growth, it is sustained. We consider our clients to be joined with us like for always. And the same way our suppliers also. Like our suppliers also literally 35-40 years, our suppliers are also with us. That is one thing. And the second thing is being ethical. Being ethical in whatever you do, in your promises, in your manufacturing, or along with your workers also, with your employees, and even with your suppliers. Great, sir. I am sure the audience who are watching this video, they will get inspired by the journey of Mr. Jaswinder Sokhi and their team. And we wish you good luck, sir. All the best. Thank you.